Good morning students, class 8 chapter number 14 factorization. In the previous video we complete out chapter number 11 mensuration. Now we start factorization of an algebraic expression. Algebraic expression, it is the combination of variables and constant and with the sign of operation. It is called algebraic expression. For example, 2x square y z. It is a algebraic expression because it is contain variable as well as constant. We also can write plus 2x. So it is also an algebraic expression. So in this chapter we discuss about factorization of algebraic expression. So to start we discuss about factorization of a natural number. हम किसी natural number का factor कैसे करते हैं. For example, we have to factorize 20. हमें 20 के फैक्टर्स करने हैं. So we just note down 20 is equal to 1 multiply 20, 2 multiply by 10, 4 multiply by 5. So we can say that all factors of 20 1, 2, 4, 5, 10, 20. क्योंकि 20 इन सबसे डिविजिबल है, सो दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 20. सो एनी नेचुरल नंबर वी कैन वेरी इजीली फैक्टराइज इट, बट फॉर अ algebraic expression because it contain variable, so we have some problems. So how can we factorize an algebraic expression? So to factorize an algebraic expression we write it एज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स. आपको ने फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज इट इज एन algebraic एक्सप्रेशन, सो वी नोट डाउन इट 2 multiply x multiply y. So 2 is a factor of this, x is a factor of this, y is a factor of this. So अगर आपके पास कोई मोनोमियल यानी कि सिंगल टर्म है, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट इट्स फैक्टर. बट इफ इट इज गिवन दैट अ बाइनोमियल, देन हाउ कैन वी फैक्टराइज इट? बिकॉज दीज टू algebraic एक्सप्रेशन इनके बीच में साइन कैसा है? प्लस. और टू फैक्टराइज वी राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स. सो हाउ कैन वी फाइंड आउट? सो इस चैप्टर में हम इन्हीं चीजों को सीखें कि हम इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी नोट डाउन 1 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3x स्क्वायर. सो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया. सो ये दोनों ही इसके फैक्टर्स हैं, ये पूरा और ये 1 भी. लेकिन हमें यह देखना है कि क्या मैं इसे और मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकता हूं. So for this 2 multiply x, हमने इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा and it is also. And now we observe that variable x, in this term also variable x is present, in this term variable x also present. So we can take x common. तो इट्स मीन x मल्टीप्लाई 2 प्लस 3x. तो ये इट इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस. तो बस आपको उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है, और मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखने के बाद जितने भी आपके पास ये टर्म होंगी, दीज आर फैक्टर्स ऑफ algebraic एक्सप्रेशन. सो आई होप आपको फैक्टराइजेशन ऑफ algebraic एक्सप्रेशन का थोड़ा सा बेसिक क्लियर हुआ होगा. Just note down and we start exercise 14.1. Okay student, now we start exercise 14.1. Exercise 14.1, first question. We have to find out common factors of the given terms. The question contains total 8 parts and all parts are same. In the each part some terms are given. For example, in the second part 2 terms are given. In the fifth part 3 terms are given. In the eighth part 3 terms are given. So we have to find out number of, मतलब आपको इनमें कॉमन फैक्टर्स बताने हैं. फर्स्ट डिस्कस इट सेकंड पार्ट 2y.
write in the form of product, it's mean 2 multiply by y, 22xy 2 multiply 11 multiply x multiply y. Now common factors. Common factors, we observe that 2 and y, ये दोनों हम कह सकते हैं कि कॉमन फैक्टर हैं इसके. इट्स मीन वी ऑल्सो कैन राइट 2y, यानी कि पूरा का पूरा जो 2y है वो इन दोनों टर्म में क्या कॉल किया जाएगा, कॉमन फैक्टर. अच्छा, इन दिस क्वेश्चन इट कंटेन 3 टर्म्स. फर्स्ट टर्म 6abc, इट्स मीन 2 multiply 3 multiply a multiply b multiply c. 24ab square 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply a multiply b multiply b. b square mean b multiply b. 12a square b 2 multiply 2 multiply 3 multiply a multiply a multiply b. Okay, note down common factors. So we observe that 2 is common, 3 also common, 1a also common and 1b also common. 1 2 common, 1a common, 3 also common and 1b common. So these are common factor. It's mean 2 multiply 3 multiply a multiply b, it's mean 6ab. तो हम 6ab को कॉल कर सकते हैं इट्स कॉमन फैक्टर. Similarly you can try its 7th part. Factorize 10pq, it's mean 2 multiply 5 multiply p multiply q. Very easy. Now 20qr, 2 multiply 2 multiply 5 multiply q multiply r, and 30rp, its factor 2 multiply 3 multiply 5 multiply r multiply p. Now common factors. 1 2 as a common, 1 5 also common, q नहीं, q contain ओनली 2 टर्म्स. क्यू केवल इन 2 में प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्यू को एज अ कॉमन फैक्टर कंसीडर नहीं करेंगे. ऐसी जो वेरिएबल p है वो इसमें तो प्रेजेंट लेकिन यहां प्रेजेंट नहीं है. सो कॉमन फैक्टर इज ओनली 10, नो वेरिएबल. तो आई श्योर दीज पार्ट्स आर क्लियर. सो सिमिलरली यू कैन ट्राई इट्स ऑल पार्ट. ट्राई योरसेल्फ ऑल पार्ट्स and doing homework, and if you have any problem you can discuss with me. Note down it. Okay student, now we try its question number 2. In the question number 2, factorize the following expressions. The question contain total 10 parts. We just note down its first, fourth and 7th part. Firstly, factorize its first part. 7x minus 42, it contains 2 terms, its mean it is binomial. So how can we factorize it? To factorize it, firstly note down first term in the form of product, it means 7 multiply x. Similarly now down 42 in the form of product, it means 2 multiply 3 multiply 7. Now in these 2 terms the common factor is 7. So we just note down 7 and in the bracket we note down its remaining term. There 7x, so 7 bracket से बाहर, so remaining term is x
minus 2 multiply by 3, it means 7x minus 6. तो इसके फैक्टर 7 into x minus 6. Now its fourth part. Similarly, minus 16z, factorize it. 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply z plus 20z square. 2 multiply 2 multiply 5 multiply z multiply z. Common factor. Obviously 2 as a common factor, 1 2 also as a common factor, and z is a common factor. So we note down 2 multiply 2 multiply z outside the bracket, and in the bracket we note down remaining term minus 2 multiply 2, because these three numbers are outside the bracket, plus 5 multiply z. So 4z, and in the bracket minus 4 plus 5z. It's mean 5z minus 4. Answer. Similarly, in the seventh part, factorize 10a square. It's mean 2 multiply 5 multiply a multiply a. 15. 3 multiply 5 multiply b multiply b. 20. 2 multiply 2 multiply 5 multiply c multiply c. Now common factor. We observe that only 5 as a common factor, so we note down 5 outside the bracket. In the bracket we note down remaining terms. So 2 multiply a minus 3 multiply b plus 2 multiply c multiply c. तो 5 in a bracket 2a square minus 3b square plus 4c square. Answer. तो I showed seventh part also clear. Its remaining part you can try yourself. बस आपको उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना हर एक टर्म को. आफ्टर दिस you can factorize very easily. So I show question number 2 is clear. Just note down. In the next video we continue exercise 14.1. Thank you very much.